Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Like nothing I found, my mind overwhelmed. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to. बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट में अपना फर्नीचर का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बहुत आराम के साथ में आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं बहुत आराम से, आप बिना कुछ पैसे लगाए अपना फर्नीचर का बिजनेस कर सकते हैं ऑनलाइन और एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप सबको पता है दोस्तों आज की डेट में ई कॉमर्स बिजनेस एक बहुत ही अच्छी ऊंचाइयों पर है और आगे आने वाले सालों में ये बिजनेस बढ़ने ही वाला है। ई कॉमर्स बिजनेस में अगर आप आज से काम करते हैं तो आने वाले कुछ समय में ही, इनफैक्ट 6 महीने में ही आप काया पलट कर सकते हैं। बस आपको तरीका सही पता होना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, मैं आपको जो मेथड बताने वाला हूँ, इस मेथड को देखने के बाद आप आराम के साथ में अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन फर्नीचर शॉप बेसिकली ओपन कर सकते हैं और एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर फर्नीचर का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें कि ना पर कस्टमर की जो बाइंग रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो आपका एक कस्टमर है ना, वो भी अगर आपके पूरे घर का फर्नीचर खरीदता है तो वो भी 50-60 हज़ार 1-1 लाख का होता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि अगर आपको
अच्छे खासे कस्टमर मिलते हैं ना ऑनलाइन में, तो आप एक अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधा वीडियो के अंदर और पूरा मेथड आपको बहुत आराम के साथ में समझाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, फर्नीचर का बिजनेस आपको यहाँ पर कोई फिजिकल स्टोर नहीं खोलना, आपको कोई फर्नीचर की शोरूम नहीं खोलना, आपको कोई फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं खोलनी, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ सर्विस देनी है। अब ध्यान से सुनिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए मैं बहुत सारी फर्नीचर शॉप्स पे मैंने विजिट किया अपने घर का फर्नीचर लेने के लिए। उनसे बात करने के बाद मेरे को पता चला कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ऑनलाइन अपने फर्नीचर को डाल पाएँ। काफ़ी सारे ऑनलाइन पोर्टल्स पे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे, शॉपक्लूज, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। इनफैक्ट उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट मैंने बहुत सारे फर्नीचर शॉप्स पे विजिट किया, किसी की भी अपनी वेबसाइट नहीं थी। एंड कुछ शॉप्स पे मैं गया तो उनकी वेबसाइट